Hey guys, hi, yes, we are back with our second episode of TWC. Yes, we made it. Yes. So, what's trending in our country? A lot of things, isn't it? India ऐसा country है जहाँ पे content की तो कमी ही नहीं. That's why I thought of becoming a comedian. But well, though we are locked in, चूतिया लोग चूतियागिरी करना छोड़ने नहीं वाले. Like Use your machinery, use your goons, use your might, use anyone you can. Use anyone you can, but I'm telling you, Sonia Gandhi, we have the support of the people of India. करता हूं आधा से 1 मिनट आप होल्ड कर लेते हैं तो इसका मतलब आपको कोरोना नहीं है, आप निश्चिंत होकर रहिए। बिल्कुल। और यदि आप 1 मिनट तक रोक पाते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई कोरोना का सिम्टम नहीं है। Okay, I am guessing you instinctively know this, but that's just not true in any way whatsoever. You can't test for the coronavirus by holding your breath. However, I do have a way that Geraldo can test for the coronavirus, but this will only work for Geraldo and absolutely no one else. So are you listening, Geraldo? Okay, hold your breath just like this. Right, you're doing it? Now keep holding it. Keep holding it, Geraldo. Keep holding your breath. Keep holding that breath, Geraldo. I know you might be feeling dizzy and you might be about to pass out, but don't worry, G-Man. That just means that the test is working. Just keep holding your breath. Your lungs are probably really burning. That just means you're disinfecting them. Well done. Keep holding your breath. I will tell you when to let it out. I'm not going to tell him to let it out. विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का कहना है कि 10 सेकेंड या इससे ज्यादा समय तक सांस रुकने से कोरोना वायरस का पता नहीं चलता है। कोरोना का पता लैब में टेस्ट से ही चलता है। Of you all might be aware that TikTok's rating has been falling on Google Play. That is because of spat between the TikTokers and YouTubers. Well, it was trending, right? TikTok versus YouTube. But yeah, I am with you all, right? Everyone, like the TikTok platform is there to give you an opportunity to showcase your talents, even though you don't have talent. Yay! Well, and if the world is against you, well, I'm with the world. I say ban TikTok, not because TikTok is annoying or stuff, but because it is Chinese and ban everything from China. Bloody China. But then I also remember something our Prime Minister said. Vocal for local. तो YouTube का इंडियन कॉम्पिटिटर कौन है? वेल स्टार्टअप आइडिया अगर है नहीं तो वेल बट लेट्स कम बैक एंड फोकस ऑन द मेन इशू दैट इज द कोरोना वायरस द ओनली चाइनीज प्रोडक्ट you all thought could have ended in 21 days unlike your earphones. But well, here's what WHO has to say about it, that coronavirus is here to stay forever. Yes, you heard me right. Well, coronavirus reminds me of someone similar. Like see ना, वो पूरी like coronavirus ने बहुत सारे लोगों का murder किया है, okay? And also coronavirus traveled the whole world, ठीक है? Guys, don't show that on the screen. Well, I don't want to go to jail or something. Though we have democracy here, but still. People like you and me are annoyed with this lockdown. थोड़े दिन छुप के बाहर जा रहे, but yeah, this is annoying. But what better solution do you have? A vaccine? वो तो सितंबर तक नहीं आने वाला. Like all the agencies are saying so. But here's the thing. I feel this lockdown is a total waste. Yeah, I know. Don't get angry. Hear me out. Even I feel bad when I say that because obviously it's like you have been in a relationship for 10 years. And then suddenly the girl says it's not working out. Same way does the lockdown. And say that's the reason why you are hurt the most. इतने टाइम घर पे बैठे कुछ नहीं किया बहनचोद अभी तू बोल रहा है कि काम नहीं कर रहा है. But yeah, see the main thing why I think it doesn't work out is like because see हम लोग सबको बोले ला कि घर पे रहो and मतलब सबको एक स्पेसिफिक टाइम दिया कि तुम लोग ये टाइम पे बाहर आ सकते हो अपना एसेंशियल लेके जा सकते हो. नाउ जस्ट इमेजिन कि एक एरिया में सर्टेन लेवल का पॉपुलेशन होता है, आबादी रहती है, ठीक है? अब वो आबादी बाहर निकलती है, सब लोग वही टाइम पे बाहर निकलेंगे क्योंकि वही टाइम दिया है एंड यू हैव टू बाय. बट आई अंडरस्टैंड दैट पीपल आर वेरी स्मार्ट एंड एजुकेटेड एंड दे आर मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंस. You all can ignore this. Yeah, they are maintaining social distancing. They are wearing masks,
properly, इधर नहीं, यहाँ पे everything is being done well, but who are we fooling? कोरोना वायरस का जो स्प्रेड है वो कम नहीं हो रहा, उल्टा बढ़ते ही जा रहा है. आई फील लॉकडाउन इज लाइक द फटा हुआ कॉन्डम. हम पहन तो रहे ताकि कोरोना वायरस का स्प्रेड कम हो, लेकिन भाई आबादी तो बढ़ती जा रही है कोरोना की. नाउ बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन a lot of people have lost their jobs, lot of laborers are walking back home, and businesses are filing for bankruptcy. And I know you all are saying, hey, भाई क्या बोल रहे हैं, चुप बैठ, समझा. गवर्नमेंट ने क्या स्कीम निकाला है, 20 लाख करोड़ का पैकेज भेजेला है. इट विल बी एवरीथिंग मस्त मस्त. नाउ देखो, पता है 20 लाख करोड़ में जीरो कितना आता है? पता है क्या? नहीं भाई, नहीं पता है. माई मैथ्स इज वीक, बट आई डू नो कि गवर्नमेंट ने ये जो 20 लाख करोड़ बोलेला है ना, ये पूरा गवर्नमेंट के पॉकेट से नहीं आ रहा है. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द फिगर्स, around 8 lakh crore is given by the RBI in the form of loans with low interest. So what the RBI will do is, RBI अपने रिजर्व बेचेगा और बैंक्स को लोन देगा. वो बैंक लोन अपने एंटरप्रेनर्स और कंपनीज और इंडिविजुअल्स को लोन देगी. ठीक है, अभी ये जो लोन है वो लेस इंटरेस्ट पे रहेगा. बेसिकली हेल्प नहीं हो रहा है, लोन दे रहा है जो बाद में चुकाना पड़ेगा. माइट बी हेल्पफुल, बट आई डोंट नो. ऑल्सो ये जो पैकेज है 20 लाख करोड़ का, उसमें से 8 लाख तो गए, बाकी के 12 लाख करोड़ वो भी गवर्नमेंट ने ना ऐसे पूरा 12 लाख करोड़ नहीं दिया. बाकी का जो था ना, वो ऑलरेडी पिछले जो बजट में जो फरवरी में आया था उसमें से सब चिपकाया है. ये हम लोग का पुराने बजट में हम लोगों ने डिस्कस किया था. ये भी पहले पुराने बजट में था, ऐसा समझा गया. सो नाउ हाउ मच इज एक्चुअली द गवर्नमेंट गिविंग यू? ये सवाल तो तुम लोग के दिमाग में आने ला रहेगा, राइट? So according to companies like the Care Ratings, Barclays, and all many rating agencies, they say that the government said कि 10% GDP का दे रहे. No, they are fooling you actually. This is not what I say. This is the report. Okay, मैं अनपढ़ है, वो लोग मस्त है, मैं अनपढ़ नहीं है by the way. But yeah, so how much is the government spending? 1% of the GDP. 1%. That is around say like 2 lakh crore or something. ठीक है. अभी मेरे को पता नहीं कितना जीरोस है उसमें, लेकिन मैं इतना बोल सकता कि अगर मैंने वो पूरा पैसा तेरे को दे दिया ना, तो तू सेकेंड रिचेस्ट आदमी रहेगा इंडिया में. फर्स्ट विल स्टिल बी मोटा भाई. बट या, जोक्स असाइड, गवर्नमेंट एंड क्रिटिसिज्म आल्सो असाइड, आई फील दैट गवर्नमेंट पैकेजेस might turn out to be good if implemented well. Now speaking of things, what I personally feel is this package is fine, not bad. But yeah, if the government would have actually deposited or transferred money directly into the bank accounts of the people who need it the most, I think it would have helped very well. But who am I to say something? Yeah? We have like great people who have studied finance. Sorry, but yeah, we have great people. Also, a fun fact which you might want to know is, you know how much India spends on defense? Like India's budget on defense is 5 times more than it is on the health sector. Well, yeah, we are ready for a war, but not ready for a pandemic like this. Wow. Like we are known for having Gandhi, an idol for peace. And there's just one thing that triggers us. पाकिस्तान में है लेकिन जिक्र कश्मीर का, रहते पाकिस्तान में है लेकिन गुणगान वेस्टर्न मीडिया का, रहते पाकिस्तान में है लेकिन ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड की बात करेंगे. अरे जमीन पर आ जाए. Yeah. So guys, well, that's all in my video. Oh wait, I'm forgetting something. That the PM really cares for you. Yeah, he cares for you so much that he has been taking donations for you on your behalf, and that is not even going to be audited. Isn't that amazing?
He's doing it all for you. PM really cares. Like I saw this video the other day. मेरा तो सपना है कि हवाई जहाज पे कौन लोग बैठने चाहिए। I was ये जो एक talking बना about हुआ this है ना video, बड़े guys. बाबू, I was बड़े talking बड़े about the one. लोग, Hey, what is धनी this? लोग, ये दुनिया उन्हीं के लिए है। जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिख। But I hope you know the PM really cares. And that's all from my side. I hope you all enjoyed this video. I hope I was informative enough and you all know a little about the 20 lakh package that is coming, and a lot of faltugiris are going to happen more in our country, and I hope the government comes with a better plan to fight this virus. So that's all from my side. If you are really annoyed with this and you want to argue, hey, nahi, तेरे नहीं पता, comment down, because अभी तो lockdown चालू है. Even I am free, even you are free. Let's have a debate. Let's see. Also, if you all like me, you all think I'm a cute, innocent guy, cute-natured, good, innocent guy, so subscribe to my channel and like the video, and I shall get back with more such amazing news kind of comedy video in my segment called TWC.